process for making sugar from sugarcane, right? Okay, now the good part about this diagram is the steps have been labeled. Many times the steps are not labeled, so you don't know how many steps are there. So here we know that there are 7 complete steps of sugar manufacturing from sugarcane, right? So first process is this growing of sugarcane, which takes the maximum time 12 to 18 months. So we have sugarcane. Now harvesting can be done in 2 ways. One is using this big machine called the tractor, or it can be done manually using a sickle. Now, both the processes lead to further crushing of the sugar canes. Sugar canes are inserted into this machine-like structure with 2 wheels attached on both the sides, and the sugar canes are crushed. This process is called crushing. Now, juice is obtained after the crushing process is complete. Then this juice is further sent to a limestone filter where it is purified, right? So purification of the juice happens in this stage. This follows the evaporation stage where the entire juice is heated in a machine called evaporator, where the juice becomes a syrup. It goes into a centrifuge which rotates, and this helps to separate sugar crystals from the evaporated juice received in the previous stage, right? Then these sugar crystals are kept in a container where they are dried and cooled down for further packaging and distribution, right? So what you can do is you can divide the process into 1 2 3 steps in body para 1 and 4 5 6 7 steps, or 5 6 7 steps in the body para 2. Right, now let's take a look at your answer. The diagram illustrates the information about the procedure for making into sugar into sugarcane नहीं, from sugarcane है ना, sugarcane से बना है, sugarcane में नहीं बन रहा है. Overall the manufacturing process will start नहीं. आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करना है या फिर आप पैसिव वॉइस. प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पैसिव वॉइस इज व्हाट यू विल डिपेंड ऑन मोस्टली. सो द प्रोसेस स्टार्ट्स, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रोइंग शुगर, नहीं ना, शुगर केन, राइट, शुगर केन्स एंड ना 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 the process starts with growing of sugarcanes, growing of sugarcanes and ends with drying and cooling of sugar. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ओके, तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑफ 7 स्टेप्स, है ना, 7 डिस्टिंक्ट स्टेप्स. आपने डिस्टिंक्ट स्टेप्स लिखा है तो डिस्टिंक्ट कर देते हैं. एंड स्टार्ट्स विद, तो हम विल ट्राई टू राइट इन अ कंपाउंड सेंटेंस, राइट, क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंसेस फिर सिंपल सेंटेंसेस हो जाएंगे. तो आपका मेन सेंटेंस क्या बना, ओवरऑल comma the manufacturing process consists of 7 distinct steps, comma, and starts with growing of sugar canes, ending in drying and cooling of sugar. ठीक है, in detail में e नहीं आएगा. In detail, the first step you won't write like this, the second step you will write it in ordinal numbers, and this you will say third, right? We cannot number the steps. In detail, the first step for making sugar, in the first step
In the first step for making sugar, farmers produce seed. Seed? No, 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 no. Farmers produce थोड़ी ना करते हैं. Farmers harvest करते नहीं, harvest भी नहीं करते, grow करते हैं. Farmers grow or plant seeds, plant seeds uh, of which the the process takes about 12 to 18 months. Full stop. Full stop. Later, comma, sugar canes were growing. नहीं भाई, आप क्या लिखोगे? शुगर केन. एक तो शुगर केन जो है ना सिंगल वर्ड है, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन, ये स्पेस नहीं होगा. शुगर केन्स आप क्या करेंगे? आप पैसिव वॉइस में यूज करेंगे इसको. आर हार्वेस्टेड. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप फिर ये नहीं आएगा ना. शुगर केन्स आर फुली ग्रोन. तो आप इसको कर दो फुली ग्रोन, या फिर टिल नहीं करके, यहाँ लेटर ना करके टिल कर देंगे. टिल शुगर केन्स आर फुली ग्रोन. मतलब इनको तब तक उगाया जाता है जब तक ये फुली ग्रो ना कर जाए. ठीक है, फिर आप आ गए सेकेंड स्टेप पर. The second step is harvesting, where farmers cutting नहीं, farmers cut the crop, and transfer it भी नहीं आएगा. cut the crop, अच्छा crop है, ठीक है, तो it to a truck. ना ट्रक ट्रांसफर थोड़ा ना करता है. ये दो चीज़ें हैं. आप लिखेंगे आप देख रहे हो ना, देखो हार्वेस्टिंग किस तरह से की जा रही है. दो तरह से की जा रही है. या तो एक ट्रैक्टर टाइप की मशीन है जिसमें एक कटर भी लगा हुआ है जो कि शुगर केन को काट रहा है, और ये वाले शुगर केन जो है ये इसके लोडर में, इस टाइप का जो कंटेनर टाइप है उसमें जा रहा है. या फिर ये मैनुअली करा जाता है. एक सिकल है इसके हाथ में, ऐसी टाइप की जो चीज़ होती है जिससे कटाई करते हैं, जिससे हार्वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन मार्क सॉर्ट ऑफ. इससे ये लोग इसको कट करते हैं and they do it manually. So this is using a machine and this is using their hands. So this is manual and this is mechanical, right? So harvesting is done in two ways. तो आप ये नहीं कहोगे कि ये काट कर इसको ट्रक में डाल दिया. नो, आप बताओगे कि हार्वेस्टिंग इज डन इन टू वेज. आपने थोड़ा सा ना समझा कम है इस पार्ट को. ठीक है, सो यू विल हैव टू री राइट दिस पार्ट. फाइन. देन हाउएवर नहीं बोलेंगे हम. हाउएवर का मतलब हम कोई कॉन्ट्रास्ट बात बोल रहे हैं. इसमें हम प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में हम हाउएवर बिल्कुल यूज़ नहीं करते. ऑफ कोर्स इट इज़ डिपेंडेंट ऑन केस टू केस, बट हम यूजुअली क्या करते हैं, लिंक जो वन थिंग टू अनदर लिंक कर रही है, जैसे फॉलोड बाय, फॉलोइंग दैट, पोस्ट दैट, राइट. And firstly, secondly, later on, subsequently, finally, these words are to be used more in the process description, right? Now in the, maybe if you're tired, or if you think that this is getting too repetitive, first, second and third, you can say in the next step. Then you'll put a comma. Raw sugar cane, only sugar canes, transferred nahi, are transferred into the crushing machine, and then sugar cane converted nahi, and juice is extracted. ठीक है, juice is extracted from them. तो इसमें से जूस को निचोड़ लिया जाता है, स्क्वीज आउट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है. एंड द मशीन इज कॉल्ड द, no, there is no name of the machine. So this process is called the crushing process. So in the crushing process,
Actually, it's not really the crushing machine. Maybe we can say that it's a crushing machine. Now, furthermore is fine. The the fourth step, the fourth step involves. Fourth step is nahi. Fourth step involves purifying the juice in the limestone. In a limestone filter. After that, juice is transferred in the burner. क्या हमें पता है ये burner है? नो वी कैन से इट्स कॉल्ड एन इवेपोरेटर. हम इसे इवेपोरेटर कहेंगे क्योंकि हमें बर्नर नाम नहीं गिवन, तो हम अपने एंड से ये नाम नहीं देंगे. राइट, सो यू विल से इन द इवेपोरेटर एंड हीटेड. It transferred in the and heated after evaporating. No. Evaporating क्या है? उस heat के time पे ही निकलता है. So during evaporation of the juice. तो इसका जो heat होता है वो evaporation हो रहा है. ठीक है. Here at this stage you can say at this stage juice becomes a syrup. देन कर दो इसे, मोर ओवर नहीं. मोर ओवर मतलब आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, तो मोर ओवर भी ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं हो सकता. यू कैन से देन, लेटर, फॉलोड बाय देन, कॉमा. इन द नेक्स्ट स्टेप या इन द सिक्स्थ स्टेप, आप इसको ऐसे नंबर मत दो, राइट द नंबर्स डाउन. इन द सिक्स्थ स्टेप द शुगर क्रिस्टल्स आर. तो जहाँ भी आपने डायरेक्ट वॉइस यूज़ की है, आपको इनडायरेक्ट यानी कि पैसिव वॉइस आपको यूज़ करनी है. Sugar crystals are separated from syrup. In the final step, sugar goes into the cooling and drying machine. After that, sugar is ready to supply. नहीं, पहले pack होगी. Is ready to be packed and supplied to the market. तो आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है जो भी जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, आप तो एक तो वो लोगे, सब्जेक्ट मानोगे उसको, और एक आप इज़ या आर लगाओगे डिपेंडिंग ऑन आपका सब्जेक्ट क्या है. अगर सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है तो आर, राइट. एंड देन यू विल यूज़ द वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है ग्रामर के लिए, अपने आंसर को लिखने के लिए. सब्जेक्ट इज़ आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस. So mostly you use passive voice while describing the process diagram. Now let's do